लोग की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें मेरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे। Would you like to say something? No, actually, the general idea is to protect the soul of the Kashmir. So the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. जैसा कि डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है, जैसा डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया, ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, 51 अगर क्लैरिकल कुछ होगा we'll correct it. INC 32 and we have agreed और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट in a very disciplined manner from both sides and we have narrowed it down to 5 seats and over and above these 88 seats we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers Party. So in total it comes to 90 seats जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से वी विल स्टार्ट our issuing the this mandates from right now. Yes. So what about the other 5 seats so far? He said that we are going to have a friendly contest on that. So what exactly do you mean by friendly contest? They will also contest, we will also contest. That's what friendly contest. K.C. Venugopal ji, Bharatiya Janata Party has raised question for National Conference manifesto asking कि autonomy resolution की National Conference की बात की है, 370 की बात की है. Where is the moral right to say for Bharatiya Janata Party like that? Bharatiya Janata Party had alliance with the National Conference earlier. They had alliance with the PDP earlier. National Conference, the same old National Conference is still
National Conference. Same old PDP, still PDP. They had alliance with both the parties, with the same program. Every political party have their own programs, their own manifesto, their own promises. We have our own promises, our own manifesto. When we are forming the government, there will be a common minimum program. Sir, first will be included in common minimum program. Please, one ask. Wait. For Kashmir, because the people of Kashmir are cheated by BJP now. Everywhere we heard about that union territory becoming a state. Here the only one state, the state become the union territory, which are done by BJP. They already cheated the people of Kashmir, Jammu and Kashmir. Therefore, that is why we want a free BJP government in Jammu and Kashmir. Entire nationalists are also suffering through BJP. Their divisive agenda, their divisive policy, unemployment of Kashmir, Jammu and Kashmir is increasing day by day. There is no solution. Largest unemployment. Largest unemployment in the state. There only one agenda is to divide the people. We are believing in progress of the people. We are believing employment for the youth. We are believing in the unity. But they are believing in destructive politics. सर फर्स्ट फेज में कितनी सीट कांग्रेस लड़ेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीट लड़ेगी क्योंकि No, that details we will circulate. All details we will circulate. Are you not happy that we have got unity? That we are united to fight. Is that not enough for We you? will circulate that. We will circulate every You will detail. circulate, we will tell you which are the Every friendly detail. states. Phase wise as well Are you as worried about the Yeah, cut to Mr. Randall. Yeah, Mr. Boy. one question. Okay, thank you very much.